सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज भवानी। समस्त को आम चैनल साइस्टडी क्लासेस को स्वागत। तो आज तुम मान आम वेरी इंपोर्टेंट सेगमेंट प्रैक्टिस सेट 18 नहीं कि आछे कहार ना इंग्लिश रे एवं सेथरे हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम मान को डिमांड अनुसार ही आलोचना करछे। जो मान को भी जहां भी डाउट्स अछि बा जहां भी क्वेरीज रहउछि से मान निश्चित मात्रा रे कमेंट सेक्शन में जणै परिबे। ता सहित से माने 7894072404 नंबर मध्ये कांटेक्ट करि परिबे। ता सहित एटा हमर टेलीग्राम हैंडल, एटा हमर यूट्यूब हैंडल, इथे आपण माने जॉइन करिवे। ता सहित एटा हला हमर प्ले स्टोर ऐप मध्ये जाई कि आपण डाउनलोड मारि परिबे। ठीक अछि। ता सहित जो माने भी छो हम क्लास को नुआ अछंती बा जो माने भी हम क्लास को न्यूली विजिट करछंती से माने हम चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक एवं वीडियो को बहुत मात्रा रे शेयर करि परिबे। जा फले जो माने फ्री ऑफ कॉस्ट रे माने बीएड प्रिपरेशन होजन से माने को इजीली क्लास पहुंची परिबो बा इजीली माने से माने देखि परिबे। ठीक अछि। तो बिना डेरी रे हमें क्लास को आगु बढ़िया। जो माने भी लाइक करना है एत पर्यंत टिके लाइक कर दियंतु एवं समस्त को शेयर कर दियंतु जे क्लास स्टार्ट हेलानी समस्त जल्दी जॉइन हो जाओ। ठीक अछि। तो हमर सेम सेगमेंट छ हमें प्रथमे आगे देखिबा क्वेश्चंस कोन कोन रहउची। ही नंबर ऑफ ऑटिज्म केस इन ऑस्ट्रेलिया इज मेनली। ऑटिज्म माने छ एटी फर्स्ट कथा देखियो ऑटिज्म माने कोन। ऑटिज्म ओके, ऑटिज्म माने कोन, ऑटिज्म माने कोन। ठीक अछि। ऑटिज्म इन केस ओके, ऑटिज्म माने बधे कौन हेतियो। ओके पढिले देखिबा तार एग्जैक्टली आसु नाही। ओके तापर देखि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हाइलाइटेड वर्ड प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट ओके, प्रोटैगनिस्ट, प्रोटैगनिस्ट। ठीक अछि। प्रोटैगनिस्ट माने प्रोटैगनिस्ट माने हला छुआ कोन ना नाटक बा गुरु मुख्य चरित्र। व्हाट इज द एपिसोडिक मेमोरी? व्हाट इज द एपिसोडिक मेमोरी? व्हाट इज द एपिसोडिक मेमोरी माने एपिसोडिक माने हला विभिन्न कांड बा उपवाक्य बा उपखंड। ठीक अछि। द सुइटेबल टाइटल फॉर द पैसेज इज, तापरे हला द पैसेज प्राइमरी फोकस ऑन। ठीक अछि। तो एबे हमें देखिबा हला पैसेज रे कोन कोन रहउची। Around 1 in every 70 Australians are on the autism spectrum. Okay, autism spectrum. तापरे देखो the proportion of children with the autism is higher. फर्स्ट कथा छुआ ऑटिज्म माने देखिबा हो ना नहीं। ऑटिज्म, ऑटिज्म मीनिंग माने जेडा हला छुआ कहा जाय one type of a mental condition. ठीक अछि। a mental condition in which person find difficulty to communicate or form relation with the other people. माने अन्य people सहित communicate करिबा एवं केमिति से माने रिलेशन स्थापना करि पारंती नाही। ठीक है। mental condition in which a person find it difficulty to communicate or form relationship with the other people. ठीक है जी। नेक्स्ट देखो। हाँ, अराउंड 1 in every 70 Australians, 70 जन ऑस्ट्रेलिया मध्यरु जणे जनकार ऑटिज्म स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम थाए। The proportion of children with the autism is higher. More than 80% of all Australians on the autism spectrum are aged under 25. ठीक है जी। Autism is most prevalent, okay, prevalent among school aged children between 5 and 14. Okay, सब जिनस कहा रहता है ना 5 से 14 वर्ष भीतर। Many of these children have social learning, communication and intellectual difficulties. The high proportion of children on the autism spectrum present on obvious challenge to teacher and the learning environment. Episodic memory is stimulated when the exposed to visual information. People with the autism sometimes perform better when the visual task, but one way to possible stimulate is that could be through the use of video-based instruction by VBI. VBI helps the children with the autism gain social skills. Okay, तो एठू हमें एतकी जो पढ़िले जानि पारले जे एटा हला कोन ना माने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम जेमन को जदी छुआ कोनोसी पिक्चुरियल मेथड रे जदी कोनोसी जिंस देखा जाय बा खंड खंड वाक्य करी बा कोनोसी जिंस देखा जाय सेमान को लर्निंग करिया पई, पढिया पई, कम्युनिकेट करिया पई तामे भलो हेइ थाय। ठीक अछि।
जेमती से माने कम्युनिकेट करि पारंती निज स्किल को डेवलप करि पारंती बा से माने किछि जिंस को निज को इंप्रूवेशन करि पारंती ठीक अछि it showed student with autism could more easily learn functional skills and transfer and generalize them. The children are taught to actively analyze and every episode a conscious memory of a previous experience and to build alternative stories around it. With themselves as a protagonist, they learn to visualize the situation and imagine it changing. Many students with the autism have often difficulty with the regarding of comprehension. Some research show teaching visualization strategy to read unachievers generally enhance reading comprehension. माने मेन कथा हला सेमानंकु ए जो comprehension हो किबा कोनोसी भी जिंस माने ताकु हला कोन ना छोट छोट उपखंड वाक्य रे बा छोट छोट पिक्चुरियल मेथड रे बा स्टोरी बिल्डिंग मेथड रे बा स्टोरी कहि की ठीक है सेमान को बुझा जाए जेमति धरो जो सपोज आमे कहूचे जे गोटे बड़ वाक्य को जेम केमति आमे छोट वाक्य रे परिणत करिबा केमति कंप्रिहेंशन करिबा ठीक अछि सेही सब जिंस ऊपर एटा माने आधारित ओके देखो प्रथम क्वेश्चन कहिछि ही the number of autism case in Australia is mainly between 3 to 14 between 5 to 10 5 to 14 1 to 10 कोटा बच्चा हमें पढ़ी के आसले जल्दी ही को 8 अछि आंसर देखो 8 ही अछि जमान जदी पढ़िला बेले टिकिए भी ध्यान देथिबे ताले 5 to 14 ठीक अछि 5 to 14 5 to 14 ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द protagonist ର correct meaning कौन what is the meaning of adult main character children and opponent मु तुमको कहली मुख्य कर्ता बा मुख्य लोक ताको मेन कैरेक्टर कोली कहा जाए ठीक अछि what is the episodic memory episodic माने खंड बा उपखंड माने जेमति मेमोरी माने छोट छोट जे जहा को हमें धरो जो जे वाला कोन केमिति मेमोराइज करे छोट छोट करी मेमोराइज करिवो functional skills social action recalling past and teaching visualization ठीक अछि तो कौन हबो 3 नंबर सी recalling past ठीक अछि recalling past ओके The suitable title for the passage is Previous Memory, Autism in Children, Autism in Adult, Enhanced Social Skill. Which one is the correct answer? Autism in Children. Okay. The passage primarily focuses on everyday tasks, autism among Australian, gain social skill and learning empowerment. Option B is the right answer. Autism among Australian. Okay. बुझी पारलो ना नहीं इजीली बुझी पारथिबो निश्चित मात्रा रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन कहिछि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन कहिछि what is the one word substitution for the expression the thing that have no life what is the one word substitution for the expression the thing that have no life inactive inanimate unanimate and unlively which one is the correct answer कोनटा छुआ exactly correct हबो answer हला छुआ option B is the right answer inanimate okay the thing that have no life is equal to inanimate माने अजीव लोक ठीक है inanimate describe thing a lack of life inactive हला suggest that something is not currently in use not necessarily lifeless unanimate is less common than inanimate in the and meaning the same thing untively describes something lacking liveliness and excitement not necessarily like itself choose the one word substitution for the given group word ridiculous use of word okay ridiculous use of word कौन हबो छुआ ridiculous use of word neologism pun onomatopoeia and malapropism कोटा बच्चा ridiculousism used in one word ridiculous माने हला छुआ कोन अहेतुक बा अधिक टाइप ओके ridiculous ridiculous माने जब तुमको अहेतुक थट्टा करिवा बा उपहास्य करिवा ठीक अछि
आंसर कौन हो? What is the right answer of this question? Option D is the right answer. Malapropism. Malapropism. Malapropism refers to the incorrect use of word, often the similar sounding one. Neologism is newly coined word. Pun mane play on word for humorous effect. And onomatopoeia to piola. Onomatopoeia is a word that imitates the sound it describes. Choose the one-word substitution, the substitute for the given group of words. A person having great love and understanding for nature, art, and etc. Artist, connoisseur, and critic, and cynic. Which one is the correct answer? कोड अच्छा ठीक उत्तर हबो ए पर्सन हैविंग ग्रेट लव एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर नेचर आर्ट एटीसी आर्टिस्ट connoisseur and critic and cynic. Option B is the right answer. Connoisseur. A connoisseur is someone with a deep appreciation. Okay, with a deep appreciation and knowledge of a particular subject. Artist create not necessarily has deeply understanding of it. Cynic is a distrustful skeptic, not someone who appreciate beauty. Critic analyze and judge, not necessarily with a deep love and understanding. Do you understand the system of classification used in study of word? Study of word को हमें कौन कहे? Ornithology, एपियोलॉजी, जूलॉजी एंड बायोलॉजी এটা তো হবে না এটা হবে না এটা হবে না ornithology is the right answer. Apology study of bees, zoology study of animal in general, biology is study of living organism. A division of the order which is feeding on mainly fruit is only represented by a single species in Japan. Frugivorous, fructious, herbivorous, and fructose. Which one is the correct answer? Frugivorous. Okay, frugivorous is the right answer. Frugivorous describe animal that mainly eat fruit. Fructose means bring fruit or producing good result. Herbivorous refers to animal that eat mainly plant material, and fructose is the type of sugar found in fruits. Find the word which is correctly spelled from the given option. Adjective, gradient, fragmented, and erroneous. कोटा बच्चा which one is the correct answer? जल्दी से कहो कोटा हबो ठीक उत्तर. राइट आंसर है छुआ एटा हबो नहीं एटा हबो नहीं एटा हबो नहीं एटा हबो एडजेक्टिव हबो. देखो EXHAUSTIV means comprehensive and the thought, but through the word comes from the Latin word exorius. Okay, to drain dry. Gradient है misspell ठीक है GRADIENT. Fragmented है FRAGMENTED and ERRONEOUS erroneous. Okay, find the word which is correctly spelled for the given option. Fascible, ethereal, assimilate, and exemplary. Sorry. कोड आगे तुम मैंने कहो. ओ सॉरी यार. कोड आ बच्चा. देखो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. एग्जाम्पलरी. एग्जाम्पलरी है माने है कौन ना सर्विंग एज द मॉडल एंड एग्जाम्पल, बट एसब है अच्छा भूल अच्छी. ओके, फैसिबल है अच्छा कौन हम FEASIBLE फैसिबल. इथेनॉल है ETHEREAL. तापर एसिमिलेट ASSIMILATE एसिमिलेट. देखो एड थी वो
अछि ना find the word which is correctly spelled from the given option inclination sibling tapre perplex and regrettable which one is the correct answer कोटा छुआ यार ठीक उत्तर है inclination is the right answer देखो inclination means the natural tendency and natural disposition sibling है sibling perplex है perplex and regrettable है regrettable regrettable तापरे लच्छा find the which correctly spell oscillate legitimate empathy and problematic which one is the correct answer अच्छा देखो एटा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर करेक्टली स्पेल लेजिटिमेट ओके देखो explain the confirmation to the law onto the word legitimate word establish the rule the word comes from the latin word legitimus okay means lawful oscillate la o s c i double l a t empathy la e m p a t h y problematic p r o b l e m a t i c problematic तापरे देखो the two brothers went up to the Mumbai together later they followed dash way later they follow कौन होगा छुआ separate way but क्यों separate is the right answer option C is the right answer separate separate है ना नहीं OFDC एटा OFDC ओडिशा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एग्जाम रे पड़थिला ठीक है जी dash data is necessary to understand a database design कोटा आवे छुआ metadata okay metadata means la kono na the word metadata means the data is that describe other data okay next question देखो omni in the word omnivorous refers to omnivorous टा कहा कुछ रेफर्स करू जी all omnivorous टा सब बड़े all को रेफर करे देखो omnivorous means all the word omnivorous means eating both plant and animal ठीक है जी नेक्स्ट है द प्रीफिक्स बेनी बेनिफैक्टरी सदाबेले छ वेल भलो कथा को सदाबेले हला ये करथाय एटा देखो वेल मु सदन भी तुमको बुझेइतली रिफॉर्म होवनी बिफोर होवनी एटा होवनी वेल होवो बुझ पारलो नेक्स्ट क्वेश्चन रेस्पेक्ट और मोस्ट सुटेबल प्रीफिक्स रो कोन होवो छ रेस्पेक्ट रो डिसरेस्पेक्ट ओके अपमान नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द डैश फॉरेस्ट कौन अब मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफॉरेस्ट डिफॉरेस्ट में डिफोर्स्ट ओके डिफोर्स्ट मीनिंग द मीनिंग रिमूव फॉस्ट फ्रॉम ओके तो एतिक थिला तुम मन को पई छ इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम मन क्लास केमति लागला निश्चित मात्रा रे मते कमेंट सेक्शन में जणेबो टेक केयर सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास जहां भी किछि डाउट अछि कमेंट सेक्शन में जणे दियंतु वीडियो को बहुत मात्रा लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु जहां फले हमें आउरी नुवा नुवा कंटेंट आपन मन पई आनी बारिया थैंक यू थैंक्स टेक केयर सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास